Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 4 of the study of poetry by Mathew Arnold. And in this lecture, we will learn about the 3 methods for finding out the best type of poetry. Out of these 3 methods, 2 methods are discarded by Mathew Arnold: the personal approach, the historical approach. Both of them are discarded, and the touchstone method or the real estimate is favored. So, in this lecture, we'll try to find out what is meant by the personal approach or the personal idea of judgment, the historical idea of judgment, and the touchstone method or the real estimate for judging the best type of poetry. We know from Matthew Arnold, the study of poetry, that poetry has the power of delighting us. It also has the power to console us, and it can strengthen us spiritually. These 3 functions can be performed only by that type of poetry which has highest order of excellence. Therefore, it is necessary to find out which poetry is of the highest order of excellence. How can we do this? Matthew Arnold tells us about the 3 methods. Out of these 3 methods, he favors the last one, the touchstone method or the real estimate, and he discards the personal or the historical estimate in order to find out what is the best type of poetry. Now, this highest standard of excellence can be judged with the help of the touchstone method. However, Matthew Arnold warns his readers against the personal and the historical estimates, and according to him, these 2 estimates, in order to find out which poetry is the best type of poetry, these 2 methods should not be followed because they are not correct. And we'll discuss them in detail by one now. The touchstone method, or also called the comparative method or the real estimate, it is favored by him. So let us discuss first of all the personal estimate. In the personal estimate, as the name indicates, something, a poem or a book, might have been very important from the personal point of view. That personal estimate, if somebody is estimating a poem, and the poem of a person who is his contemporary, who lives in the same age in which this critic lives, then it is possible that his personal prejudices, his personal likes and dislikes, they come in the way of that judgment. And as a result, this judgment is vitiated, and this judgment will not be correct type of judgment. Because if we try to talk about our contemporary, then in the way of the judgment or partiality or fixed notions or fixed ideas in the mind, they may come in the way of our judgment, and as a result, our judgment will be falsified. It will not be the correct type of judgment. Even Dr. Johnson, who's a very famous critic, you have studied Shakespeare. Dr. Johnson has done his Shakespearean criticism, and Matthew Arnold tells us that even the criticism of Dr. Johnson is vitiated by personal prejudices. This happens, as I said, when we try to judge our contemporaries, because when you judge your contemporaries, you may like him. If you like him, you will then exaggerate his merits, and if you don't like him, then you will belittle him or belittle his poems. So this personal estimate, therefore, is not fit for judging the best type of पोइट्री. इसको उर्दू में भी सुने. हम इस वक्त जो टॉपिक कर रहे हैं वो 3 मेथड्स हैं, पर्सनल, हिस्टोरिकल और टचस्टोन मेथड, जिसको रियल एस्टिमेट भी कहते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी कहा जाता है. ये 3 मेथड्स हो सकते हैं किसी वर्क की अहमियत को
या बेस्ट टाइप ऑफ पोइट्री को जानने के लिए। इसमें से दो को वो डिस्कार्ड करता है, पर्सनल और हिस्टोरिकल को, कि ये ठीक नहीं है, और टचस्टोन मेथड या कंपैरेटिव मेथड या रियल एस्टिमेट ये सबसे बेहतरीन है। ये हम जानते हैं कि उसका बेसिक आइडिया ये है कि पोइट्री का जो फीचर है ये इमेंस है। बार बार हमने इस बात को पढ़ा है कि पोइट्री का फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड ये इमेंस है, ग्रेट है। तो ये पोइट्री के जो फंक्शंस हैं ये हमें खुश करता है, पोइट्री खुश करती है, डिलाइट करती है, हमें दिलासा देती है, कंसोल करती है और हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है। ये बड़े अहम फंक्शन है। ये होंगे तब जब पोइट्री हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस की होगी। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस को मालूम हम कैसे करेंगे, तो वो हमें टचस्टोन मेथड बताता है कि ये बेस्ट है, और हमें वार्न करता है पर्सनल एस्टिमेट और हिस्टोरिकल एस्टिमेट से कि ये दो मेथड ठीक नहीं है। पर्सनल एस्टिमेट जैसे नाम से वाज़ेह है और समझने में आसान भी है। ये वो एस्टिमेट है जिसमें कोई शख्स अपनी प्रेजुडिसेस, बोगस और लाइक्स और डिसलाइक्स इस्तेमाल करें। मसलन आप किसी पोइट को जज कर रहे हैं, वो इसी एज में रहता है जिसमें आप रहते हैं, तो ये इम्कान है कि आपकी जो जजमेंट है वो इसके बारे में ठीक ना हो। क्यों ठीक ना हो? इसलिए ठीक ना हो कि आपकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। आप उस लाइक्स और डिसलाइक्स को जब इस्तेमाल करेंगे किसी नज़म को, किसी किताब को एवेल्युएट करने में, तो वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपकी जजमेंट को ख़राब कर सकती है। अमूमन ये जब आप कंटेम्प्रेरी को, अपने हमअसर को, आप ही के ज़माने में जो शायर रहता है, जब उस पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो ज़्यादा चांस ये है कि ये पर्सनल रीज़न्स इसमें सामने आए। तो अगर आपको वो नापसंद है तो आप उसको कम दर्जा बताएंगे, और अगर आपको पसंद है तो आप उसको नॉर्मल से जितनी तारीफ का वो मुस्तहिक है उससे ज़्यादा उसकी तारीफ करके एग्जेजरेट करेंगे। So quite easy. Personal estimate, which means that your personal likes and dislikes, they come in the way of your judgment. It often happens when you try to give an estimation of your contemporary. The second method, again, which is not a good method and which Matthew Arnold discards, is the historical estimate. Once again, as the name indicates, there are many works um, which might have played a very important role um, historically, and it might have been very important from the historical point of view. But the intrinsic merit, that is the actual significance as far as the inherent quality in this is concerned, that is not very great. So, if the work of a poet has played a significant part in the course of the development of language or the poetry of a nation, and you try to judge it, then this thing can come into your way that historically it has played an important part, an important role, so you might consider it the greatest work, while it is actually not the greatest work. It only is historically important, intrinsically it isn't. So if this happens, we are then inclined to either overrate it or to exaggerate it. And we can belittle it, we can also overrate it. So this can happen. He gives a few examples and he explains his point with the help of these examples. For example, he talks about Cadman and Chanson de Roland, the two poems. Cadman is the name of a person. Some of the critics, they think that Cadman is the type of person who is equivalent to Milton, and whatever he has written is equivalent to whatever Milton has written. So Cadman and Milton are compared. Then French poem Chanson de Roland. These two poems, this one, the poem, and this one is the person, Cadman, the explanation and the
explanation and the story of these poems. They are given here, and if you want to check them, you can check them there, and if you don't, it doesn't matter, no problem. So he gives the example of Cadman, that people have compared Cadman with Milton. This is something which is not correct, and people have compared Chaucer de Roland with the epics of Homer. That is also not correct. And then he explains that Cadman has a very great significance historically. He was an important personality because he wrote in a time when language was not that developed, and with the help of his poems, the language developed historically. It is very important, but historically, not intrinsically. To compare it and give him the rank of Milton, that is an overrate and it is a falsification. It's not correct. Next is Chaucer de Roland. Once again, this is a French poem, and it was written quite early, and historically it played a remarkable role. Historically, it is a remarkable poem, and it is a document of very high significance, linguistic significance, and historic value. However, comparing it with with Homer is not correct. So, therefore, we often um, exaggerate the historic importance. So, if something is historically important, we even give it credit intrinsically too, and we heap supreme praises upon poetry of an order immeasurably inferior. This is what happens. So, this, according to him, is not correct. This is the second type of estimate called the historical estimate. ये उर्दू में सुन लें. दूसरा जो मेथड है जिसको वो पसंद नहीं करता, ये एस्टिमेट भी सही नहीं है, वो है हिस्टोरिकल एस्टिमेट. हिस्टोरिकल एस्टिमेट में क्या होता है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, कोई वर्क हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है, हिस्ट्री में इसने कोई रोल प्ले किया है, और या लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज को इसकी वजह से डेवलपमेंट मिली है, और इस वजह से ये इम्पोर्टेंट रहा है. किसी नेशन की पोइट्री शुरू में जिस तरह थी उसकी वजह से इम्पोर्टेंस मिली है, तो लोग इसको बड़ी अहमियत देते हैं, ओवररेट करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं. मैथ्यू आर्नल्ड ने एग्जाम्पल दिया है, कैडमन की एक शायर का नाम है, कि लोगों ने इसको मिल्टन के साथ कंपेयर किया है, और चॉसर डी रोलैंड की एग्जाम्पल दी है जो नज़म का नाम है, होमर की नज़मों के एपेक्स के साथ कंपेयर किया है. मैथ्यू आर्नल्ड हमें बताता है कि कैडमन की नज़में हिस्टोरिकली तो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन उसको मिल्टन का रैंक देना ये ओवररेट होना है और फॉल्सिफिकेशन है. चॉसर डी रोलैंड इसी तरीके से एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट नज़म है फ्रेंच लैंग्वेज में, और ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लिंग्विस्टिक हवाले से, हिस्टोरिक वैल्यू के हवाले से, लेकिन हम इसको होमर की एपिक्स की का स्टेटस नहीं दे सकते, और हम अमूमन जो है प्रेजेस देते हैं इस किस्म की पोइट्री को जो असल में बड़ी इंफीरियर टाइप ऑफ पोइट्री है. ये चॉसर डी रोलैंड का जिक्र हुआ है, इसकी वजाहत अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से स्टडी कर लें, इसकी स्टोरी भी इधर दी हुई है, यहाँ से कर लें, और अगर नहीं चाहते तो मत करें. इस तरीके से कैडमन का भी इधर जिक्र है. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने एक नज़र देखना है, सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाए, और अगर नहीं देखना तो तब भी ठीक है. सो पर्सनल एस्टिमेट and historical estimate, both of them are not good methods. The real method is the real estimate, and that is the Touchstone method. So this is the most important method. All these three methods are important from examination point of view. Perhaps these are the most important areas in the study of poetry by Mathew Arnold. So in the Touchstone method or comparative method, as the name indicates, we leave out the historical estimate, we leave out the personal estimate. Historical estimate comes when we deal with the ancient poets, and personal estimate comes when we deal with the contemporary poets. The real worth or greatness of a poet can be found out with the help of Touchstone method
or with the help of comparison or comparative method. So if we are studying a poem and we are enjoying this poem, this work, we need to appreciate its superiority. But how should or how could we discover that the poem has a real excellence? The first thing which we should do is, of course, we should avoid the personal estimate and the historical estimate. And secondly, um, Arnold tells us that it would be of no avail to judge poets understudy on the basis of our ideas of characteristics of high poetry. So this would be a kind of personal estimate. If we try our own ideas, that would not be correct. These abstractions, these wrong methods should not be used. Then what should we do? We should always have in our minds lines and expressions of great masters, lines and expressions of great poets. We should have in our mind always, we should keep those expressions and those lines in our minds, and then apply these expressions and lines as a touchstone method. They should be used as a touchstone, as a goldsmith tries to find out the true quality, the actual quality of gold with the help of a touchstone. These lines can be used as a touchstone in order to find out whether the poetry is the best type of poetry or not the best type of poetry. So this is that method that should be used, and this is called the touchstone method. These lines and these phrases, if we have tact, if the critic has some tact, then he will be able to use them perfectly, and it will prove infallible and perfect touchstone method. The degree of the quality, or whether it has the best quality or not, that will very easily be found out. But he tells us that these touchstone lines, they should be lodged, they should be kept in our minds always, and they can be short passages, they can be even single lines, and the single lines also will serve our turn quite sufficiently in order to use them as touchstone methods. So compare the lines and passages from the poet understudy with lines and passages from acknowledged classics. You should have the lines and passages of acknowledged classics in your mind, and then apply these lines and passages from them to the poet understudy, the poet which you want to have criticism about. And Mathew Arnold tells us, this is a quotation from him, these few lines, the ones we have selected from the masters, if we have tact and can use them, are enough even of themselves to keep clear and sound our judgments about poetry. If we have some tact, he doesn't tell us what is that tact, but he says if we have tact, if we have better understanding, we can use them as touchstone to save us from fallacious estimates of it. We will not go wrong in this estimation to conduct us to a real estimate, and we will be able to do the real estimate using it as a touchstone method. These lines, comparing these lines with the poet understudy, we will find out which one is the best poem or the best writer. This method, however, touchstone method, it has also provoked a great deal of criticism. A lot of people have criticized this method. Garrett, for example, he calls this method an admirable fooling. He calls it a kind of fooling. It is not a good method. There are many problems with this method. For example, there is the problem of correctly choosing the lines and passages. If you use, for example, you use these touchstone lines, you will have to use your own volition, your own willpower, in order to find out which lines are the best type of lines. And how will you do that? You will do that with the help of your own volition, with the help of your own will. And that again will become personal. So choosing the lines always will be personal. It cannot be objective. So Mathew Arnold hasn't given us any objective criteria
for this purpose, which can be used without involving your personality. Even if you choose the lines, the perfect lines, even then you will be involving your likes and dislikes. The other problem with this method is that if you are selecting lines and you are selecting passages, why not select the total work? Because the best type of impression is the one which can be that of the total impression. So instead of choosing one line or instead of choosing one passage, you should select the whole poem, and then that impression should be compared with the impression given by the whole poem under study. Longinus, as you know, has also talked about the same method in order to find out sublimity or the best quality in a poem. But this method must be extended to the whole works instead of being limited to short passages and lines. So it is better to use the impression of the whole poem, of the whole book, instead of using single lines or only a few quotes or just a passage. So this is that next method. इसको ज़रा उर्दू में भी सुन लें. हमने टचस्टोन मेथड अभी डिस्कस किया, जिसको रियल एस्टिमेट भी कहा जाता है और जिसको कंपैरेटिव एस्टिमेट भी कहा जाता है, टचस्टोन मेथड भी कहा जाता है. तो हिस्टोरिकल मेथड तो ठीक नहीं है, और अमूमन जब हम एंशंट की का जिक्र करते हैं तो हिस्टोरिकल मेथड हमारे सामने आता है. और पर्सनल एस्टिमेट ठीक नहीं है, ये तब आता है जब हम कंटेम्प्रेरी पोइट्स की क्रिटिसिज्म करते हैं. जो रियल अंडरस्टैंडिंग और रियल एस्टिमेट है वो टचस्टोन मेथड है और वो कंपैरेटिव मेथड है. जिस तरह नाम से पता चलता है कि इस मेथड में आप सबसे पहले चंद लाइनें या कोई एक पैसेज किसी ज़बरदस्त राइटर से लेते हैं, ग्रेट मास्टर से लेते हैं, और ये लाइनें अपने जहन में जमा लेते हैं. ये लाइनें जब आपकी जहन में जम जाती है, फिर ये टच स्टोन का काम करती है. टच स्टोन, जिसको कसवट्टी भी कहते हैं, ये एक किस्म का छोटा सा पत्थर होता है और ये सुनार लोग इस्तेमाल करते हैं क्वालिटी मालूम करने के लिए कि सोने की क्वालिटी अच्छी है कि अच्छी नहीं है, और इसको कसवट्टी कहते हैं उर्दू में. तो यही मेथड इधर भी वो इस्तेमाल कर रहा है. मैथ्यू आर्नल्ड कहता है अगर क्रिटिक में थोड़ा सा टैक्ट है, अब ये टैक्ट की भी वजाहत नहीं करता कि किस किस्म का टैक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी अगर तरीका आता है उसके मुताबिक, तो ये परफेक्ट टचस्टोन मेथड है. और इससे पता चल जाएगा कि जो पोएट अंडर स्टडी है वो अच्छा है या अच्छा नहीं है. ये पैसेज भी हो सकता है, ये चंद लाइनें, एक लाइन भी हो सकती है, और ये काफ़ी है इसको निकालने के लिए कि कौन सा बेहतरीन है. तो ये मेथड कहलाता है टचस्टोन मेथड. ताहम इस टचस्टोन मेथड की वजह से बहुत सारे क्रिटिक्स भी सामने आए. गैरेट, जो कि उसके मैथ्यू आर्नल्ड की अच्छा सिंपैथेटिक क्रिटिक है, लेकिन इसने भी इसको एडमिरेबल फूलिंग कहा कि ये बेवकूफ़ी की बात है, ये जो मेथड इसने टचस्टोन बताया है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स है. पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आप लाइनें और पैसेज कैसे सेलेक्ट करेंगे. उसमें आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स ऑटोमेटिकली शामिल होगी. दूसरा मसला ये है कि आप ये क्यों कहते हैं कि किसी एक लाइन को लिया जाए या एक पैसेज को लिया जाए, क्यों ना टोटल नज़म को लिया जाए. उस टोटल नज़म की इम्प्रेशन को टोटल नज़म जो पोएट अंडर स्टडी है उसकी इम्प्रेशन के साथ कंपेयर किया जाए. और ये लॉन्जाइनस ने भी बताया है, जब वो हमें बताता है कि किसी पोएट में शान व शौकत, सब्लिमिटी, ये कब आएगी, तो उसने ये मेथड बताया. लेकिन ये आप एक्सटेंड करेंगे होल वर्क को, न कि सिर्फ एक लाइन की आप बात करेंगे कि ये इस एक लाइन में है. नेक्स्ट, Matthew Arnold gives us different examples from different poets of the lines which can be used as touchstone method. He takes lines from Homer, Dante, Shakespeare, and Milton,
And all those selected items are acceptable, they are great, with the exception of these two lines from Milton, which says this is certain, and courage never to submit or yield, and what is and not to be overcome. Here, Sutton talks about his courage. He thinks that one should never submit, one should never yield, and what should never be overcome. So the poets and the critics have objected that these two lines, the sentiment and the moral in these lines is noble, of course, no problem, but the diction and the rhythm of these two lines is faulty. We can say that Arnold tripped here and he did a mistake, um, and that we should take the impression of the whole rather than the impression of the parts or the lines. The total impression is the most important one. तो ये ज़रा सुने, उर्दू में भी ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स वो देता है कि जो पोइट्स हैं, मास्टर्स हैं, इसमें होमर, डांटे, शेक्सपियर और मिल्टन शामिल हैं, इससे इसने लाइनें ली हैं। लाइनें सारी ज़बरदस्त हैं, एक्सेप्टेबल हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये दो लाइनें एक्सेप्टेबल नहीं है। इनमें सेंटिमेंट और मॉरल तो नोबल है, लेकिन इसका डिक्शन, अल्फाज और इसके मूवमेंट यानी इसका रिदम ये सही नहीं है। तो ये दो लाइनें एक्सेप्शन है, बाकी लाइनें जो है आर्नल्ड शायद खुद भी इस बात के साथ एग्री करे कि ये जो इसका मेथड है ठीक नहीं है और ये होल पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसने खुद भी इस बात पे इंसिस्ट किया है कि टोटल इम्प्रेशन को देखना चाहिए और ये जो मेथड है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए और होल इम्प्रेशन पे लागू किया जाए तो ये सही होगा। अब अगर ये पता ना चले इससे तो फिर क्या किया जाए, तो फिर वो हमें बताता है कि मैटर और मैनर ऑफ पोइट्री को लेना चाहिए। पहले सब्सटेंस उसको देखें, ये हाई सीरियस होना चाहिए, और फिर स्टाइल ऑफ पोइट्री जिसमें डिक्शन और मूवमेंट सुपीरियर हो। तो ये अगर हो और ट्रूथ और सीरियसनेस हो, सब्सटेंस में ट्रूथ और सीरियसनेस हो और स्टाइल में डिक्शन और मूवमेंट हो, तो ये बेस्ट टाइप ऑफ पोइट्री होगी। अगर हमें ऊपर की टचस्टोन मेथड से पता नहीं चलता तो फिर इस बात से हमें पता चलेगा कि इसका सब्जेक्ट मैटर और इसका स्टाइल ये कैसे है। Our criticism of Arnold is that we think that he underestimated the significance of the personal estimate. Personal estimate is also important because if a piece of literature means much to us personally, then this means that we have found the utmost that is really in it, because we give preference to our likes and dislikes, and if we found something enjoyable and something good personally, then that is important for us. So the aim of the alert reader is to acquire a sense of intimate personal relationship with the work. If we do not have intimate personal relationship with the work of art, then we will not be able to enjoy it. Therefore, we argue that no judgment about a book has become a real judgment until it has become a personal one. And the French critic Saint-Beuve also tells us, and he wanted to know all about the life and circumstances of the writer before forming an estimate of his work. So you see, the personality is there. So personal approach is also not a bad one, according to the other critics, not according to Arnold. It seems as if he has gone too far, insisting all the time that the work should be excellent. But every work cannot be excellent, or there may be something excellent even in minor poems, in minor poetry, and he has disregarded a lot of poetry which is current literature, which is contemporary literature or contemporary poetry, and we think, the critics think, that contemporary literature
may have a great value because that is about us, that poetry is written for us, and that this poetry, the contemporary poetry, it faces our problems, and as a result, it is for us. So, if we do not take into consideration the contemporary poetry, we'll be out of touch with the quickening forces of our time, and something important will be lost. And again, there is some support needed for the promising young writers and poets, the contemporary poets, because the classic poets, they do not need any support. Support is needed for the contemporary poets. So we think that personal estimate is also important. However, Arnold has talked against deception, against insincerity, against charlatanism, and he is relentless in saying so. He has done a wonderful job. However, ये आखिरी हिस्सा भी उर्दू में सुन लें, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि उसने पर्सनल एस्टिमेट को अंडर एस्टिमेट किया है, इसकी अहमियत को कम समझा है। पर्सनल एस्टिमेट भी आम है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे और वो आपको अच्छी लगेगी, तो इससे यही पता लगेगा कि आपने इसमें कोई अच्छी चीज़ ढूंढ ली है। और जो अलर्ट रीडर होगा, उसके लिए वर्क ऑफ आर्ट के साथ इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जजमेंट उस वक्त तक सही नहीं हो सकती, रियल नहीं हो सकती, जब उसमें आपके अपने लाइक्स डिसलाइक्स शामिल ना हो। फ्रेंच क्रिटिक सेंट बो ये भी चाहता था कि अगर आप किसी शायर की ज़िंदगी यानी पर्सनल टचेस और किस तरीके से इसका वर्क बना है, ये सारी मालूम करें, तो ये ज़रूरी होगा और ये पर्सनल एस्टिमेट में हेल्प करेगा। हम ये भी समझते हैं कि आर्नल्ड थोड़ा-सा ज़्यादा इंसिस्टेंस कर रहा है हाई एक्सेलेंट लिटरेचर में, और क्योंकि हर एक पोएम अज़ीम-ओ-शान नहीं हो सकता, छोटी-छोटी नज़मों में भी एक्सेलेंस पाई जा सकती है। और अगर आप बहुत सारी जो करंट पोएट्री है कंटेम्प्रेरी, उसको इग्नोर करेंगे, तो ये भी सही बात नहीं होगी, क्योंकि कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हमारे लिए होती है, ये हमारे प्रॉब्लम्स के मुताबिक होती है, और ये हमें सपोर्ट करती है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट बात ये है कि जो ये यंग क्रिटिक्स हैं और पोएट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, जो कि कंटेम्प्रेरीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है पर्सनल एस्टिमेट, क्योंकि जो एस्टेब्लिश्ड क्लासिक्स हैं, उनको तो सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी हैं। तो कंक्लूजन यही है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने डिसेप्शन के ख़िलाफ़, धोखे के ख़िलाफ़ बात की है, इनसिंसेरिटी के ख़िलाफ़, शार्लटेनिज़्म के ख़िलाफ़, और इसमें ये बहुत सख्त रहा है। तो 3 मेथड्स का ज़िक्र इस लेक्चर में हुआ। पहला जो मेथड था, उसको हमने डिस्कस किया और हमने कहा कि ये इसको डिस्कार्ड करता है और इसको पसंद नहीं करता, और वो था पर्सनल एस्टिमेट, जिसमें आपके लाइक्स डिसलाइक्स शामिल हों। हिस्टोरिकल एस्टिमेट में कोई वर्क हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट होता है, इंट्रिंसिकली नहीं होता, और हम गलत सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी वजह से। तो बेस्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया वो टचस्टोन मेथड है, और इसमें हम कंपेयर करते हैं मास्टर्स के लाइन्स को जिस पोएट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी लाइन्स के साथ, और हम पता लगाते हैं कि ये बेस्ट है कि नहीं है। हमने उस पे अपनी क्रिटिसिज्म भी की, और जो क्रिटिक्स ने इस पे क्रिटिसिज्म की उसका भी जिक्र किया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड गुड लक।